In today's video, we are going to continue our previous lesson, that is the structure of protein. The subtypes that we are going to cover here is the introduction of those subtypes, the structure, and the examples, and then there is an interesting quiz, right? So let's start. As we have discussed that protein has four type of structures, right? This is the primary protein structure and the secondary protein structure. We are done with that. We are left with the tertiary one and with the quaternary one, right? So a quick overview, right? We know that in primary protein structure, these are the simple chain of amino acid, a long simple chain of amino acid. In the secondary protein structure, it is usually in the form of a helical shape. एंड जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं ईच सक्सेसिव टर्न पे वो उस शेप को मेंटेन कर रहे होते हैं नाउ व्हाट इज द टर्शियरी प्रोटीन स्ट्रक्चर व्हाट इज द क्वांटिनरी प्रोटीन स्ट्रक्चर लेट्स हैव अ क्विक लुक एट दैट सो द टर्शियरी स्ट्रक्चर इसमें क्या होता है यूजुअली अ polypeptide chain bends and folds upon its own self like here as you can see in this picture a polypeptide chain that is bending and folding on its own and it is forming a globular shape. So this is what our tertiary structure look like. This is the protein tertiary conformation. It is maintained by three type of bond. इनमें तीन तरह के हमें bond नजर आ रहे होते हैं like the hydrogen bond as you can see in this picture a bond that is existing between the hydrogen and the other atoms. Then there is a disulfide bridge to sulfur atoms and then there is an ionic bond. So these three bonds they are present and this shape is maintained by these bonds. This is a structure and this is a further detail. They also have hydrophobic interactions, right? अगर हम एक एग्जांपल देखें तो जो एक्वस एनवायरनमेंट होती है उसमें मोस्ट स्टेबल जो है वो टर्शियरी कन्फर्मेशन ये होती है कि जिसमें हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड आपके बरिड इनसाइड होंगे जैसे कि यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे हाइड्रोफोबिक जो है इंटरेक्शन ये इनसाइड है वाइल दी हाइड्रोफिलिक आर ऑन दी सरफेस यहाँ पे हाइड्रोफोबिक जो है वो इनसाइड है हाइड्रोफिलिक जो है वो आपको सरफेस पे लगेगी so this is the most commonly we can say stable tertiary conformation जहाँ पे हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड इनसाइड पर होते हैं जबकि हाइड्रोफिलिक जो हैं वो आउटसाइड पर होते हैं हाइड्रोफोबिक आर द वाटर फेयरिंग हाइड्रोफिलिक आर दोज हु आर नॉट राइट so this is the example of our secondary structure. Okay, then there is a quaternary structure. अब ये highly complex protein है. They are also known as ओके सो दीज आर दी हाईली कॉम्प्लेक्स प्रोटीन यहाँ पे जो पोलीपेप्टाइड टर्शरी चेन्स होती हैं दे आर हेल्ड टुगेदर बाय द हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस ठीक है यहाँ पे ये जितनी भी पोलीपेप्टाइड टर्शरी चेन्स हैं दे आर हेल्ड टुगेदर बाय देयर इज सम सॉर्ट ऑफ हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन अमंग दैम जो कि इसको इकट्ठे रख रही है यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड है यहाँ पे आयनिक बॉन्ड है यहाँ पे जिसकी वजह से इनका जो स्ट्रक्चर है वो मेंटेन है See, this is the structure, the quaternary structure जहाँ पे एग्रीगेशन हुई हुई है polypeptide chains की जो कि दो से या दो से ज़्यादा हैं and it is forming a quaternary structure, right? यहाँ पे भी अगर आप देखें तो आपको अल्फा और बीटा चेन्स नज़र आ रही हैं अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे थ्री लेवल्स ऑफ प्रोटीन को एक टेलीफोन वायर के साथ कंपेयर किया हुआ है ये एक प्लेन वायर है राइट ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है जो कि सिंपल चेन है फिर अगर हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर को देखते हैं तो यहाँ पे एक हेलिकल स्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ पे हेलिकल स्ट्रक्चर है और यहाँ पे कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड है जिनकी वजह से जो है ये शेप मेंटेन हो रही है
उसके बाद ये टर्शियरी स्ट्रक्चर है, दिस वन, जहाँ पे जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो कॉइल हो रही हैं और एक ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर को बना रही हैं। और ये शेप कैसे मेंटेन हो रही है कि यहाँ पे कोई डाइसल्फाइड बॉन्ड है, कोई आयनिक या कोई हाइड्रोजन बॉन्ड है, जिनकी वजह से ये जो इनकी स्ट्रक्चर है ये मेंटेन हो रहा है, इनकी शेप जो है वो मेंटेन हो रही है। उसके बाद एक एग्जांपल भी है, जैसे कि जो हीमोग्लोबिन है, दी ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन ऑफ रेड ब्लड सेल, हीमोग्लोबिन here it exhibit such structure। जो क्वांटिनरी स्ट्रक्चर होता है ये हीमोग्लोबिन उसकी एक एग्जांपल है, ठीक है। उसमें भी यही है कि बहुत ज़्यादा दो या दो से ज़्यादा ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड टर्शियरी चेन जो ये हैं ये आपस में एक दूसरे के ऊपर हैं, जिसकी वजह से ये एक स्ट्रक्चर को बना रहे हैं। सो दिस कॉन्स्टिट्यूट द एंड ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। Now here is the quiz time. So the first MCQ that we got for today. There are dash structures of protein. Protein के कितने structures होते हैं? 4, 5 और 6. As we have discussed in this video and the previous one that there are four structure of protein. The primary structure, the secondary, the tertiary and the quaternary structure, right? Then this second MCQs is the structure that coil into the helic form as primary, secondary or tertiary structure. As we know that the primary structure are the simple long chains of the amino acid. The tertiary structure is in the form of a globular shape, right? So the option that we are left with is the secondary structure. Secondary structure is in the form of helix like this, और यहाँ पे हर जो इसकी साइड है वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जिसकी वजह से जो है ये मेंटेन कर रहा है अपना स्ट्रक्चर. सो दिस conclude the end of our today's lesson. If you guys got any question, ask them below and I'll get back to you as soon as possible. Thank you so much for watching.